Okay. Sorry students, actually मेरा This current चला गया था. Okay. So there is not any option है ना. Current internet both was just shut. Okay. कहाँ थे हम लोग? So I hope ये तो आप लोगों को clear हो गया होगा है ना. Del L upon del R dot is equal to M R dot 1 plus B square R square. So when we will go for here, then you have D upon dt. Del L upon del R dot is M R dot 1 plus B square R square, and minus, you have to use this particular thing. So this thing we have already calculated. So this is the value M R dot square B square R square minus MR theta dot square plus mg br. And what will be this value? ये value क्या होगा? That value is m r double dot 1 plus b square r square. और यहां पर कई स्टूडेंट ने फिर से गलती किया था, और वो गलती ये थी कि you have to again differentiate it because r is your dynamical variable, isn't it? So this value is equal to 2m b square r dot square, one r dot from here, one r dot from here, and 2 is just differentiating this r square, minus m r dot square b square r square minus mr theta dot square plus mg br must be equal to what? 0. This must be equal to 0, and these two things will be compensate to each other, and finally you can go for the final answer that r double dot plus b square r square plus 2m, and this is 2 will be 1, so that will be m r dot square b square r square minus mr theta dot square plus mg br must be equal to 0. So this is your equation of motion, isn't it? Clear है ये? Okay. yes, sir. चलो, so let's go for some more problem, है ना? कुछ और प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. ओके. लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ मूविंग पेंडुलम. कैसे पेंडुलम की तरफ मूव कर रहा है? मूविंग पेंडुलम. सो दिस इज योर मूविंग पेंडुलम. So what is going to happen? There is two mass. This is my mass m1, you can say, and this mass is nothing but what? m2, and this is mass m1, and m1 is constrained to move along x-axis. So m1 is constrained to move along x-axis, and m2 is constrained to move in xy plane. The length of this thing is what? L, and this is constrained to move in xy plane. So what we have to do? We have to write the Lagrangian of a system. Obviously, where should be origin? Obviously not at this point, because this point is itself moving. So we can just use this as my origin, and I can give the x1, y1, z1, and we know the equation of constraint x2, y2, z2. What are equation of constraint? That y1 is equal to 0, z1 is equal to 0 for mass m1. And what about m2? m2 के लिए क्या हो रहा है? You have z2 is equal to 0, isn't it? Yes. And there is one more constraint that relates that distance between these two particles is always fixed. So we can write x2 minus x1 whole square plus y2 minus 0 whole square must be equal to L square. And now we know that this particle is moving in a long line. So what I can write, my kinetic energy for first particle is half m x dot square, and this particle is moving in a plane. So this is given by, and you can write m1 half m2, and this is your x2 square plus y2 dot square.
And now, what is your potential energy? The potential energy, this is moving in horizontal plane or horizontal axis along horizontal direction. So there is not any potential associated to this. We can assume this is at the zero potential, and I can assume this is at negative potential. So B is nothing but minus mg y2. But hold on, what is your degree of freedom? What is your degree of freedom? 2 degree of freedom. You have 3 into 2 minus 4 is equal to 2 degree of freedom. So now if you have 2 degree of freedom, then obviously you need how many generalized coordinate? 2 generalized coordinate. But unfortunately, we are using here how many generalized coordinate? 3 generalized coordinate. So what we have to do? We have to use the fourth constraint. We have used this one, we have used this one, we have used this one, but we have to use this one. But hold on. This equation is what? Equation of circle. Where is the radius? What is the radius? L. And what is, and where is the center? X1, Y1. X1, Y1. X1 and, sorry, X1 and 0. X1 and 0. So you have center here. So if this is center, I have to take theta from here. So obviously, I can replace my x2 and y2 in term of theta and x1. And this is my x1, isn't it? And this is my x2. Are you getting my point? क्या मैं कर सकता हूं क्या? Is that my this x2 is a function of x1 and theta? Yes, sir. Yes. So I have to use geometry. Geometry means you are using the configuration, all the information given in the configuration. You are just trying to use this thing, isn't it? So let's try to go for this. देखते हैं क्या हो रहा है? Yes. So I can write x2 is equal to x1 plus L sine theta. Are you people going to appreciate it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And y2 is equal to L cos theta. Yes. And from here, I can write x2 dot is equal to x1 dot plus L cos theta, theta dot, and y2 dot is equal to minus L sine theta, theta dot. Isn't it? Minus L sine theta, theta dot. So what do you have to do? You have to just put all this thing here. So जब यहाँ पर हम put करेंगे first, so I am just writing the Lagrangian directly. The first term will be always there. m1 x1 dot square plus half m2 x2 dot square plus y2 dot square. Hold on. x2 dot square plus y2 dot square. I can write this a, this b, this c. If I am writing x2 dot square, what is meaning of that? Meaning of that a square plus b square plus 2ab. Yes. And Yes, y2 sir. dot square is equal to c square. So a square is always there. B square plus c square is equal to what? L square theta dot square, isn't it? Yes, sir. And Yes, sir. 2ab is also there. There is cross term. And what is this 2ab? x1 dot and L theta dot cos theta. Yes. So I can write it directly. So whenever you have sine and cos, try to just make adjustment with sine square theta and cos square theta. So I think this is x1 dot square plus L square theta dot square plus 2L theta dot x1 dot and cos theta. Yes? x1 dot, not x1 dot cos theta. Now you can see how many generalized coordinate we are using. The 2. 2. And this is kinetic energy. We can go for potential energy also. So this will be minus mg. y2 is nothing but L cos theta. Now you can again check. Suppose this particle will stop. ये अगर रुक जाएगा, then what will happen? The whole system can be converted into simple pendulum. Yes, sir.
पूरा का पूरा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पेंडुलम में? यस या नो? Yes, sir. यस, एंड यू कैन चेक हो रहा है क्या? x1 डॉट इज इक्वल टू 0, देखो हो रहा है? यस, ये Yes, वाला sir. पार्ट 0 हो जाएगा, हाफ m2 l स्क्वायर थीटा डॉट, एंड माइनस माइनस दिस विल बी प्लस साइन. ओके, माइनस माइनस दिस विल बी प्लस साइन. क्लियर है ना? Yes, sir. So this is my Lagrangian of a system. Is that any cyclic coordinate? Yes, sir. What is that cyclic coordinate? X1. x1 is your cyclic X1. coordinate. So which quantity is conserved? Sir, linear momentum M1. बताओ तो linear momentum क्या होगा इसमें, इस सिस्टम का? Calculate it. What will be linear momentum? What will be linear momentum? बताइए. M1 This plus will be M2. m1 plus m2. X1 dot हाँ, plus L theta dot M2 cos theta. very good. Del Yes, L sir. upon del x1 dot is equal to px1, you can say. This is your linear momentum. So linear momentum is m1 x1 dot plus m2 x2 dot, and you have to this thing plus m2 l theta dot Sir, cos sir, वो theta. X1 dot होगा sir. x1 dot, M2 obviously this is yes. x1 dot. Yes, ठीक है ना? So this is linear momentum. कहीं यहाँ गलती से m1 x1 dot या m1 plus m2 x dot मत लिख देना. Are you getting my point? This is actually linear momentum of a system, and which is conserved. This is very interesting thing, which is conserved, है ना? Are you getting my point? ये क्या है? This is your conserved because x is what? Cyclic. x1 is what? Cyclic coordinate. Del L upon del x1 is 0. This is cyclic coordinate. So this quantity is going to conserve. Are you getting my point? Okay. So now we will try to do this problem again, where we will just when we will learn the small oscillation, then we will again try to do this problem, and we will try to figure out what will be the angular frequency for a small oscillation. ये हम लोग ट्राई करेंगे निकालने का. हाँ बताइए. सर, यहाँ थीटा कंसेप्ट होगा क्या? थीटा थीटा कंजर्व का क्या मतलब है? थीटा कंजर्व क्यों होगा? थीटा क्यों कंजर्व होगा? व्हाई थीटा विल कंजर्व? इज दैट थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट? मतलब डो एल बाई डो थीटा हाँ तो क्या जीरो है? आ जाएगा ना? कहाँ जीरो आ रहा है? यहाँ ये कॉस थीटा क्या करेगा? ये कॉस थीटा क्या करेगा? ओके सर, सॉरी सर. ओके, नो नीड टू सॉरी, बट ध्यान से देखने की बात है ना? ट्राई टू सी. ये इसके साथ है ना? यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसी कारण मैंने लिखा. ओके, सो एवरीवन इज कंफर्टेबल? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चले. लेट्स गो फॉर Yes, व्हाट? sir. डबल पेंडुलम, है ना? So this is your double pendulum. Okay, so let's try to go for this one. What is your double pendulum? One simple pendulum and again one simple pendulum. Let's say this is M1, this is L1, this is M2, this is L2, and this is my origin O. So this is my double pendulum. Okay,
Now, let us try to go for, and this double pendulum is constrained to move in vertical xy plane. So this is my x-axis and this is my y-axis. So this is in vertical xy plane. So let's try to go for this. देखें कैसे इसे कर सकते हैं? Obviously, I keep it with free, then it is x1, y1 and z1. If it will free, then this is x2, y2 and z2. Clear है ये? Yes, sir. ओके बट ये फ्री तो है नहीं, इसके ऊपर कई कहानी है. यस पहली कहानी क्या है बताओ? पहला कहानी क्या है? z1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि Zero. एक्स वाई प्लेन में है. दूसरी कहानी क्या है? z2 इज इक्वल टू 0. तीसरी कहानी क्या है? L1 और L2 कांस्टेंट है. L1 L2 कांस्टेंट तो सबको पता है, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? सर x1 square plus x1 minus 0 x1 minus 0 very good plus y1 minus 0 whole square is equal to what? L1 L1. square. दूसरी कहानी और चौथी कहानी क्या है? x2 minus x1 Very good. That is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to what? L2 square. ठीक है, यही कहानी है. Yes or no? Okay. Yes, sir. Now, so first particle is moving in plane. So that will be half m1 x1 dot square plus y1 dot square. Second particle is also moving in plane. So half m2 x2 dot square plus y2 dot square. ठीक है भाई? ये फ्री है तब प्लेन के अंदर फ्री है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख लोगे? माइनस m1g y1 माइनस m2g y2. बट होल्ड ऑन, हमने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया. अब इस भाई साहब को यूज नहीं किया है, इसे भी नहीं किया है, इन दोनों को हमें यूज करना है. बट वी विल यूज विद द सिमेट्री, है ना? कैसा सिमेट्री का यूज करें? कौन सा सिमेट्री नजर आ रहा है? लोकस कैसा है? व्हाट इज लोकस? सर्कल सर्कल. पहले का रेडियस कहाँ है? L1 L1. सेंटर कहाँ है? 0 0 तो ऑब्वियसली थीटा Origin. यहीं से मेजर करोगे. यस और नो? थीटा 1. दूसरे का रेडियस कहाँ है? कितना है? L2. L2. वेयर इज सेंटर? x1 x1 y1 x1 y1. तो यहां से करेंगे, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई आपको ये तो विजुलाइज करना पड़ेगा ना कि कहां से हम थीटा को मेजर करें, कहां सेंटर और सर्कल का. वी आर यूजिंग द सिमेट्री. यस. नाउ कैन आई राइट फ्रॉम हियर? लुक एट दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग और कैलकुलेशन एग्जाम में भी आ चुका है. x1 की वैल्यू क्या लिखोगे जरा बताओ थीटा के टर्म में? L1 साइन थीटा. और x2 की वैल्यू क्या? सॉरी, और y1 की वैल्यू क्या लिखोगे? L1 cos थीटा. So what is your x1 dot? L1 cos theta theta dot theta 1 dot basically theta 1 okay. And y1 dot क्या होगा? Minus L1 sin theta 1 dot. यहां तक कहानी क्लियर है? yes sir ओके. तो यहां पर जब पुट कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहां लिख रहा हूं, है ना? हाफ m1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर. ये तो क्लियर हो गया. अब जरा x2 को देखते हैं. x2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पोजीशन ऑफ x2 विल डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ x1. सॉरी, पोजीशन ऑफ m2 विल डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ m1. यस यस. Yes, ये sir. कहानी को लिखना पड़ेगा हमें. सो आई कैन राइट x2 इज इक्वल टू x1 प्लस l cos थीटा 1. सही लिखा हूं? दिस डिस्टेंस इज x2 क्योंकि आप हर एक चीज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले रहे हो. एंड दिस डिस्टेंस इज x1. दिस इज x2 इज इक्वल टू x1 प्लस l cos
सॉरी L sin थीटा 1, देखो Sir, sin theta sin 2. थीटा 1, theta 2. theta 2, very good. That is x1 is equal to L sin theta 2. यहाँ पर x1 को रिप्लेस कर सकते हैं, सो x2 इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर L2 भी होगा, L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2, एंड x2 डॉट इज इक्वल टू, यहां से लिख दें x2 डॉट की वैल्यू क्या होगा, प्लस ही रहेगा, तो L1 cos थीटा 1 डॉट प्लस L2 cos थीटा 2 डॉट. ओके, सिमिलरली वी कैन राइट y2. जरा बताओ y2 क्या होगा. L1 cos theta plus L2 cos theta 2. Very good. So y2 is equal to, I am using this space, y2 is equal to y1 plus L2 cos theta 2. And what is your y2 dot is equal to y1 dot plus L2 cos theta 2. What is y1 dot? Sorry, क्या लिख कर रहा हूं मैं. What is y1 dot? ये क्या कर रहा हूं. This will be L2 sin theta 2 dot with the minus sign. What is y1 dot? Minus L1 Minus L1 Theta sin theta 1 dot minus L2 sin theta 2 dot. Are you people comfortable? ठीक है, सही किया हो ना, कुछ गलती तो नहीं किया हो, देख लो जरा. yes. ठीक है, ठीक है सर. ओके, गुड. तो अब हमें क्या करना है, इसे मैं A लिख दूं, इसे मैं B लिख दूं, इसे मैं C लिख दे रहा हूं, इसे मैं D लिख दे रहा हूं. ओके, x2 डॉट स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. हाँ, यस. सर आपने जो ये x2 वाला पार्ट में x1 plus L2 sin थीटा लिया ना, तो ये जो L2 sin थीटा वाला पार्ट में जो कंपोनेंट इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप एक बार अरे समझाइए. क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इतना फास्ट बोल रही हो, क्या बोल रही हो. सर जो x2 में आपने x1 plus L2 sin थीटा 2 जो आपने L2 का जो कंपोनेंट लिया है ना, वो मुझे इस डायग्राम में इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज एक बार एक्सप्लेन करेंगे. ये डिस्टेंस कितना है, L2 sin थीटा 2. ओके, ये डिस्टेंस x1 की वैल्यू क्या है, L1 sin थीटा 1. L1 sin थीटा 1. तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस दिस डिस्टेंस. ठीक है, ओके, दिस वन यू हैव रिटन सर x1 ना, ये जो आपने लिखा हुआ है. x1, हाँ सर, वो डायग्राम में x1 लिखा है ना आपने. ये x1 है, ओके ओके, दिस इज x1, यही तो x1 है, और क्या x1 होगा, है ना, देख लो, यही तो x1 है, ये x2 है. वो मुझे हो रहा है सर, लेकिन जैसे आप ये कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो ये पेंडुलम वाले फॉर्म में मुझे कंपोनेंट लेने में से प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्लीज एक्सप्लेन करिए, मेरा ये क्वेश्चन है. अरे भाई ये क्या डिस्टेंस है, दी L है, तो ये क्या डिस्टेंस होगा, बताओ तो. व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये L है, ये डिस्टेंस क्या होगा, L2 है, सपोज ये L2 है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस. अरे ये डिस्टेंस L है, दिस इज एंगल थीटा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस. हाँ? तो ये क्या है भैया, दिस इज L, व्हाट इज दिस डिस्टेंस. अरे तो क्लास 7th की चीजें हैं, दिस बाय दिस इज साइन थीटा, नहीं होगा क्या. अरे hello sir, you're not audible. हाँ, So you're not audible on my side. Hello. हेलो, व्हाट इज दिस डिस्टेंस. So
perpendicular by base, no? That हाँ, form sin theta. Sin theta. So this is x. So x by L is sin theta. So what is x? L sin theta. Is that any problem? No, sir. So what is, so where is problem here? The L2 sin theta, that part will be. So why L2 sin theta is problematic? This is L2. This is theta 2. What is this distance? So L2 sin theta. So this is L2 sin theta 2. Okay. So where is problem? What is this distance? What is this distance? L1 sin theta. L1 sin theta 1. This is L2 sin theta 2. Theta 2. And this is completely x2. So what is this distance? So L1 sin theta 1 plus L2 sin theta 2. L1 sin theta 1 plus L2 sin theta 2. Okay, sir. ओके जाके Okay. क्लास 8 की ज्योमेट्री रिवाइज कीजिए, ठीक है? Okay, एकदम sir. तुरंत ही जा करके, है ना? Yes, sir. ओके, गुड, वेरी गुड. कहाँ थे? चलो पहले अननेसरी चीजें हटाते हैं. प्लीज जहां भी आपको प्रॉब्लम है तुरंत उस पर काम कीजिए, है ना? क्लास 8 की ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, नाउ आई हैव टू रिमूव दिस वन ऑल्सो. चलिए, सो कैन आई गो फॉर x2 डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab and y2 dot square is equal to c square plus d square plus 2cd. There is not minus sign because both are plus. Are you people comfortable? है ना? Yes, sir. Now a square plus c square is equal to what? L1 square, theta 1 square. Very good. L1 square theta 1 dot square. b square plus d square is equal to b square plus d square. L2 square plus theta dot 2 square. Very good. L2 square plus theta 2 dot square. Now, is that any cross term also? 2ab plus 2cd, isn't it? होगा ना? So what is your 2ab? नहीं सर. Huh? Plus 2ab. L1, L2, theta 1 dot, theta 2 dot, and here is cos theta 1 plus cos theta 2. Okay? And here 2cd plus 2cd, then again 2 time L1, L2, theta 1 dot, theta 2 dot will common. So this value is equal to, sorry, into, this value is into. This value is into. Then this value is what? Plus sine theta 1 into sine theta 2. Are you getting this one? And what is cos theta 1 into cos theta 2 plus sin theta 1 into sin theta 2? क्या Cos होगा theta ये? Cos theta 1 minus theta 2. Very good. So that value is equal to, so I can write finally the final expression of kinetic energy. So this value is I am just writing the Lagrangian or first kinetic energy. So kinetic energy is half m1 L1 square theta 1 dot square plus half m2, and here you have L1 square theta 1 dot square plus L2 square theta 2 dot square plus 2 L1 L2 theta 1 dot theta 2 dot, and you have cos theta 1 minus theta 2. Everyone is comfortable? Yes, sir. Now Yes, you sir. have to go for potential energy. And what is potential energy? Minus m1g, y1 क्या था? L1 cos theta 1.
And what about the second one? Minus M2G. What is Y2? L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 2. सही हूं ना मैं? Y1 और Y2 की वैल्यू यही होगी. So this is your potential energy. Look at how long is this particular Lagrangian. And your Lagrangian is nothing but kinetic energy minus potential energy. Is that any cyclic coordinate here? Is that any cyclic coordinate? No, sir. No, there is not any cyclic coordinate. So you have to write the force equation, and we will also try to learn how we are just trying to figure out just how we are just find the angular frequency, and that will be we will done when we will go for small oscillation chapter. Okay, but I think this is a basic level of Lagrangian. We will again come this thing after one or two more after understanding the Newton's law and mainly two body problem or central force problem. Again I will come to the Lagrangian, and then we will do some more and more advanced problem. Okay, but up to that, what is your duty? आपका ड्यूटी क्या होगा बताओ? सारा प्रैक्टिस करना है इसमें और Just go and do your tutorials. Okay, ओके सर. you have tutorial with Lagrangian, है ना? यस सर. So you have to just go and do your tutorials. और जहां भी आपको confusion है, you can ask me. Don't worry, उसमें एक दो और tough questions हैं. But first you have to practice some easy problem, and then we will go for next level of Lagrangian. Okay? ठीक है? यस सर. Okay. So tomorrow we will start Newton's law. First we will try to learn what is equation of motion. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और कुछ वैसे प्रॉब्लम जिसका इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता होना चाहिए वो हम करेंगे. एंड देन वी विल गो फॉर व्हाट? Lagrangian. एंड देन वी विल गो फॉर लिटिल बिट फ्री बॉडी डायग्राम एंड न्यूटन्स लॉ को भी थोड़ा समझ लेते हैं. सम टाइम we have this sort of problem, and after then very important chapter, that is how you will write Newton's law into polar coordinate, and you can try to understand the Kepler's law. ठीक है? ये करने के बाद वापस फिर से Lagrangian पर आएंगे, and we will go into Hamiltonian and all the classical mechanics part. Okay? सर. यस सर. Yes. सर ट्यूटोरियल मींस जो स्टडी मटेरियल वाले बुक में है ना? सॉरी, हाँ ट्यूटोरियल जो स्टडी मटेरियल में. जी जी सर जी स्टडी मटेरियल वाले. आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स का होगा. जिनके पास क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है, कुछ अगर जैम के बच्चे अगर कर रहे हो इसे, तो आप सतीश सर को बोल दो, वो आपको शेयर कर देंगे सॉफ्ट कॉपी. ओके? एक्सक्यूज मी सर. यस सर. हाँ बोलिए. सर यहाँ पे जो कांस्टेंट मोशन में हम लोगों ने जो लेंथ का लिया उसमें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू l1 स्क्वायर और दूसरा वाला x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ये लिया. तो सर एक साथ भी तो लिखा जा सकता है. नहीं लिखा जा सकता ना. कैसे लिख सकते हो जरा बताओ मुझे, कैसे लिख सकते हो? L1 प्लस L2 इक्वल टू L. ये नहीं सर, वो तो सर वो उसका तो वो पैरामीटर डायनामिकल वेरिएबल ही नहीं है उसमें. हाँ तो क्या, तो फिर कैसे लिख सकते हो? जैसे इसको स्क्वायर रूट करके तो लिखा जा सकता है ना. क्या? जैसे मुझे समझ में नहीं आया. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू l1 प्लस l2. तो इससे ये कहाँ पता चलता है कि ये फिक्स है या फिर ये फिक्स है? ये कहाँ कैसे पता चलता है? आप जो लिख रहे हो उसका जरा स्टोरी तो क्लियर करो. क्या उसे बताना चाह रहे हो? समझ गया सर, समझ गया. ठीक है, मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस फिक्स है, तो इसके लिए तो मुझे वही तरीका है लिखने का. इजंट इट? समझ गया. गॉट इट सर. है ना? आप पहले स्टोरी क्रिएट करो फिर मैथमेटिक्स में लिखो इसको, है ना? ठीक है, गॉट इट. ओके, गुड, वेरी गुड. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. और देखो बहुत मजा आएगा क्योंकि अभी मैंने पूरा नहीं किया है, सो आपको थोड़ा और माइंड स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा. बट फाइनली वी विल डन ईच एंड, हम लोग फिर सारे प्रॉब्लम को पूरा करेंगे. ठीक है? यस सर. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू.